So let us now discuss the cross product of two vectors. Let us suppose here a vector and another vector is b vector. I want to find the cross product of these two vectors. This is a vector and this side is b vector. Let us suppose the angle between these two vectors is theta. Now already we discussed when you find the dot product formula was a ka magnitude, b ka magnitude into cos theta. Now instead of cos theta, now I will write here which is sin theta. That is the difference between dot product और cross. Dot में हम क्या कर रहे थे, यहाँ लिख रहे थे a b cos theta. Now I will write a b sin theta into बच्चे n cap. This is the new thing. This is the new thing. Where n cap is a unit vector gives the resultant of is a unit vector gives the direction of resultant of a vector cross b vector. So and n is perpendicular to both a vector and b vector. कि अगर मैं a क्रॉस b फाइंड कर रहा हूँ, अगर मेरा a वेक्टर लॉन्ग x एक्सिस है, b वेक्टर बच्चे मेरा लॉन्ग y एक्सिस है, तो मेरा जो आंसर होएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. इनके परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, z एक्सिस. Now how to find the direction of, for this we use the right hand thumb rule. If I want to find, चेक करना बच्चे a to b, तो अपने ऐसे इसको हल करो. This thumb will give you the direction of the resultant. So if I cut like this a to b, तो thumb is point upward. But if I find b to a, b से a की तरफ करो तो thumb किधर आएगा, नीचे downward. So one thing is clear that a vector cross b vector is not equal to b vector cross a vector. दोनों के आंसर डिफरेंट है बच्चे. A vector cross b vector is not equal to b vector cross a vector. Answer is different. Why? Because right now I have shown you that one vector direction upward side, another magnitude may be same but direction will be opposite, so it will be not. So one thing it is clear that once again बच्चे a cross b is equal to a का magnitude b का magnitude into sin theta into n cap. Now there are two cases. If theta is 0, it will be sin 0. It is also 0. This implies a vector cross b vector is also equal to. It means if two vectors are parallel to each other. If two vectors are parallel to each other, then its cross product will be 0. Cross product will be 0. And if theta is 90, no problem, then sin 90 बच्चे क्या होता है, sin 90 is 1. This implies a vector cross b vector equal to a into b into sin theta is 1 into n cap. It means in the numerical, if I want to find a unit vector perpendicular to, then I will find this a vector and b vector, then I will find this. This give me the direct unit vector perpendicular to both a vector and b vector. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. Let us find the cross product of unit vectors. Cross product of unit vector. So let us find I cap cross I cap. पीछे हमने प्रूव किया था बच्चे I dot I is equal to 1. J dot I is equal to 0. Now I am going to find I cross I. My definition, first का magnitude, second का पहले हम cos लिखते हैं, अब लिखेंगे sin. Since I and I both are in the same direction, what will be theta? Theta will be 0. And sin 0 is, आगे तो कुछ लिखना ही नहीं मेरे को. Similarly, if it is J cross J, similarly if it is K cross K, answer will be 0. Let us come to second case, I cross J. Now I cross J means one is x axis, this is j axis. So magnitude of unit vector 1, second is 1 into sin. Sin in this case will be 90 into n cap. Definition में क्या था बच्चे? There was in definition we written n cap.
So in this case, what will be n cap? N cap is a vector, unit vector, which is perpendicular to both a vector and b vector. And one is along x-axis, another is y along y-axis. What will be along z-axis? Then it will be k cap. Since it is a unit vector, so if I solve, I get I cross j is equal to k cap. That is why it is sometimes called vector product. Since you are getting the answer in terms of unit vector, I cross j is not equal to 1, it is equal to k. To understand what will be answer, there is a method to learn this thing. You draw a circle, bache, write down here I cap, j cap and k cap. So I cross j is equal to k. You can see बच्चे ध्यान से देखना बेटा, I cross j is equal to k cross I is equal to k cross I is equal to j. J cross k equal to j cross k equal to I. If you are moving clockwise, take positive. If you are moving anti-clockwise, then take negative sign. Anti-clockwise means if I find I cross k, I के बाद क्या आ रहा है k, then answer will be minus j cap. If I find k cap cross I cap cross k हो गया बच्चे, k cross j हो गया. Let us find now j cross I. j cross I anti-clock हो गया, that will be equal to minus j. So these are the formulas to find the cross product of two vectors. Now let us now find cross product of two rectangular components. In physics, when you write a vector equal to 2i plus j, this is called rectangular components x, y, z. Similarly, b vector is equal to I plus j minus 3k or minus 2k. So I want to find a cross b. ध्यान से देखना बच्चे, बहुत easy है. How to find the cross product of two vectors. तो इसके लिए मेथड क्या होता है बच्चे? मेथड क्या होता है? सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन खींचो. 10th में आप फाइंड करते थे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, बस वही मेथड है. ए वेक्टर, ए वेक्टर के सबसे पहले ऊपर लिखो आई कैप है, जे कैप और के कैप है. जैसे देखना बच्चे, हर क्वेश्चन में पहले आई कैप, जे कैप, के कैप. सबसे पहले ए था, ए वेक्टर में आई के नीचे कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का. अब बी पे आओ, बी में क्या लिखा है बच्चे? 1, जे का लिखा है 1. ए क्रॉस बी, फिर से देखो पहले ए का कंपोनेंट फिर बी का. इफ़ आई राइट बी क्रॉस ए, चेंज कर दूँगा. सिमिलरली इफ़ आई वांट टू फाइंड बी क्रॉस ए, देन फिर से आप लिखोगे आई कैप, जे के. बी पहले है तो पहले 1, 1 minus 2, फिर ए का 2, 1 minus 2. So now I am going to tell you how to solve the question like this. Once again I am taking a vector equal to a1 I cap, a2 j cap plus a3 k cap, and I am taking b vector as b1 I cap, b2 j cap plus b3 k cap. Let us find a vector cross b vector. To find a vector cross b vector, I cap, j cap, k cap. Now a vector, what is a vector? It is a1, a2, a3. b is b1, b2 and b3. कैसे सॉल्व करना देखना बच्चे. आई कैप, जिस साइड आई कैप आ रहा है उस रो और उस कॉलम को बंद कर लो. यहाँ लाइन लगा दो, यहाँ लगा दो. यू आर एबल टू सी द 4 नंबर्स. यू कैन सी, अगर मैं इधर से हाथ आ रहा है तो ये 4 नंबर नज़र आएंगे बच्चे, ये वाले 4 नंबर. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. सो आंसर विल बी a2 b3 माइनस a3 b2, देन माइनस जे कैप, ये बीच वाला. अब इस पे लाइन लगा दो, ये बीच वाली लाइन यहाँ पे लाइन लगा दो. अगेन वी आर विजिबल 4 नंबर 1 2 3 4. लुक एट दिस, 4 numbers are visible. So answer will be a1 b3, ऊपर से नीचे a1 b3
minus B1 A1 B3 minus A3 B1 B3 plus K cap. Again 4 numbers. जहाँ K cap आ रहा है वहाँ लाइन लग जाएगी. We are visible 4 numbers. So A1 B2 minus A2. So this will be the answer. Let us solve a numerical to understand this concept. So for example, I am taking A vector is equal to 3i plus 4j and B vector is minus 3i plus 7j. So I want to find A cross B. Now you can see, you will write I cap, j cap, k cap. A vector 3, 4. Now there is no coefficient of k, you will write here 0. Similarly, minus 3, 7, 0. Let us find this, which is A cap. कैसे solve this? So 4, 0, 7, 0, 0. Minus j cap. Minus j cap. 0, 0. Again 0. Plus k cap. 7 into 3, 21. Plus 4, 3, 12. So what is answer? Answer is 33 k cap. Clear? Let us solve one more example. A vector is given to you 2i plus 3j plus k cap, and B vector is given to you I cap minus j cap plus 2k cap. Got it? Now I want to find A cross B. A cross B find करना है, कर लेते हैं अभी. So I cap, j cap, once again k cap, I 2, 3, 1, 1 minus 1, 2, 1 minus 1. So how will you solve I cap? 6 plus 1 minus j cap, 4 minus 1 plus k cap, minus 2 minus k cap, minus 2 minus 3, minus 2 minus 3. So if you solve, you get this minus 3j minus 5k cap. Clear? Let us suppose in the same question I want to find A cross B का magnitude. ये तो अभी हमने A cross B फाइंड किया, अब मेरे को एग्जाम में चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना. नो प्रॉब्लम. कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर. If you solve this, which you get it is 49, 9 plus 25. And if I solve, I get it comes out to be 58, 83. That will be the answer. So why I need this magnitude? Since I am going to write formulas which you will use in solving the numerical. First formula I written A cross B is equal to AB sin theta. This one is clear to you. AB sin theta in I cap. Second formula, if two vectors are parallel, then you will prove their cross product is 0. Third, if A and B vector represents two sides of a parallelogram, represents the two sides of a parallelogram, और आपको पेपर में आता है, then find its area. Then area will be equal to, जी बच्चे देखना, A vector cross B vector का magnitude, which I did here, A cross B का magnitude. Similarly, if A vector and B vector represent two sides of a triangle, A vector and B vector two sides, then its area will be given by 1 by 2 magnitude of A cross B. Magnitude of A cross B. Similarly, if diagonals are given to you and you want to find the area of a parallelogram, this is the last one, fifth one. Fifth says that if D1 and D2 be diagonals of a parallelogram, then its area is given by
then area of parallelogram whose diagonal was given me 1 by 2 d1 plus d2. Sometimes instead of diagonals sides are given, then you will find that d1 vector can be found by a1 vector plus b1 vector, and d2 vector can be found d2 vector equal to a vector minus b vector. तो अगर तो डायगोनल डायरेक्टली दे दी तो इसमें पुट कर दूँगा, अदरवाइज इन द सेकंड पुट. नेक्स्ट फार्मूला, if I want to find the unit vector perpendicular to both the vector, then I will use this formula. A cross B, A cross B into AP. This is a unit vector perpendicular to the both A vector and B vector. Some formula that I need, I think it's enough. Let us solve some of the numerical. Numerical is very simple one. Sometime question that prove that A vector cross B vector का square plus A vector dot B vector का square is equal to A square B square. चेक करना बच्चे, बहुत सिंपल है. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ, ये लिखा है A vector cross B vector, it will be AB sin theta, AB sin n कैप का स्क्वायर. ये क्या होगा बच्चे, AB cos थीटा का होल स्क्वायर. यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर, साइन का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा. यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लोगे आंसर क्या आएगा 1. यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थे क्या होता है. सो दिस इज द राइट हैंड साइड. अनदर एग्जांपल क्वेश्चन कम प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 2 sin theta by 2, where theta is the angle between these two unit vector a cap and b cap. ये चेक करना बच्चे कैसे करना है. इसको करने से पहले आपने करना है कि कंसिडर करते हैं a कैप माइनस बी वेक्टर कैप का होल स्क्वायर की वैल्यू सेम होती है अगर मैं इनमें में डॉट फाइंड करूँ. अब कई बार पूछता सर ये कहाँ से आया, चेक करना बच्चे ये कहाँ से आया. एक अगर मैं सिंपल ए वेक्टर लूँ मैं 2i माइनस 3j कैप, अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो डॉट मतलब 2i माइनस 3j कैप डॉट 2i माइनस 3j कैप. 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, सो इट विल बी 13. अगर मैं इसका बच्चे स्क्वायर करूँ then 4 plus 9 it is also 13. It means a square is nothing but equal to a dot a. Similarly a minus b का whole square is equal to, now solve this, a cap dot a cap. A is the magnitude 1, its magnitude is 1, direction is same, so 1 minus a cap dot b cap. A का magnitude 1, b का magnitude, let us suppose angle is theta, minus ba, again a का magnitude 1, angle is theta, minus minus plus 1, so it will be 2 minus 2 cos theta. चेक करना बच्चे, 2 कॉमन, inside you get 1 minus cos theta. In class 11th, this is the formula of a minus b whole square. In class 11th, you know that this is the formula of 2 sin square theta by 2. So when I solve, I get 4 sin square theta by 2. But I want to find the value of a minus b. So answer will be 2 sin theta by 2. So what I want to prove, I prove that one. This is thing that I want to prove and I prove this one. Similarly question based on this पेपर में आ सकता है, प्रूव करो a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2. ठीक है, कर देंगे. ये क्वेश्चन ऐसे चलेगा बच्चे, इधर प्लस आ गया, इधर प्लस, ये प्लस प्लस में आ गया, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया. यहाँ लिखा था साइन थीटा. अब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ बन जाएगा 4 और लास्ट में आंसर ये आएगा. तो कई बार ऐसे भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन इज अगेन इट इज ए न्यूमेरिकल. Find a vector perpendicular to, not unit vector, question is find a vector perpendicular to a vector 2i plus 3j plus k and
b vector I cap minus j cap plus. So I have to find a vector perpendicular to this and this vector. So perpendicular to this and this vector. So if you find a vector cross b vector, I know this is a vector which is perpendicular to both a vector and b vector. So very simple, I cap, j cap, k cap, 2 3 1 1 minus 1 2. इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, आई कैप इसको हाथ 3 6 6 प्लस और कितना आ गया 7 माइनस जे कैप यहाँ पे हाथ रखा 4 माइनस 1 3 प्लस के कैप इधर हाथ रखो बच्चे -2 -3 -5 सॉल्व किया 7 आई -3 जे -5 के. So this is the answer. But if the same question comes to find its unit vector perpendicular then divided by the magnitude of A and B, और वो लिखना, वो लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, दैट विल बी द आंसर. इसको ही आपको आता है कोफिशिएंट ऑफ स्केल प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्केल. So that is the end of question based on cross product. Thank you very much.